Good morning, students. I am Gurjasjit Kaur, Assistant Professor in English. Today, in this lecture, I am going to discuss about the meaning of literature as well as the importance of literature. Why we all should read literature in our day-to-day life. Students, the word literature has been derived from the Latin word litera, Litera. The word litera literally means acquaintance with letters. Literature is a body of works, either written, oral, or visual, with the use of artistic language. Students, as a painter, paints a painting with the help of various types of colors, brush, and canvas. Similarly, a writer writes a literary work with the help of artistic use of language. Literature realistically depicts, portrays, and represents the thoughts, the emotions, the situations, and the experiences of human life. The experiences, the situations of our day-to-day human life. So, it can be said that literature is a representation of human experiences all over the world, across nations, across time, and across space. Students, actually, literature is an art that reflects the works of imagination, aesthetics, and creative writing, which are distinguished for the beauty of style and expression. So it can be said that literature is an artistic and imaginative representation of life with the use of language, with the help of language. Now, I would like to discuss about the importance of literature. Why why we all should read literature in our day-to-day life. First of all, reading literature is like looking at the mirror of life. Why I am saying that literature is a mirror of life? Because through literature, the human experiences of life, good or bad, their innermost feelings, their innermost emotions, thoughts, and the situations of life are reflected. The situations, the conditions of life are represented. The literary works such as novels, dramas, and poetry are full of various types of human experiences of life. Here, I would like to discuss about Charles Dickens. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਨਸ। ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਨਸ is a greatest Victorian novelist of Victorian age. He has represented the poverty, the social conditions, the economic conditions, along with the cultural conditions of the Britain during the Victorian age. Here I would like to take the examples of few of his novels. He has written many novels such as Hard Times, Oliver Twist, Pickwick Papers, and David Copperfield. In his novels, he has particularly depicted the social, economic, and economic conditions of the Victorian age. He has specifically reflected upon the situation of women and kids, situation of women and children during the times of industrial revolution in England. So I would like to say that with the help of his novels, with the use of artistic language, Charles Dickens has specifically reflected upon the situations of England
the situations, the political, economic and social situations of England during the Victorian time. The next importance of literature is that through literature we learn the culture of people across time and space. Students, by reading novels, dramas and poetry and other kinds of literature, a reader comes to know about the different cultures and civilizations, the cultures and civilizations of the past as well as present. The students ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕਸ ਨੂੰ, ਨੋਵਲਸ ਨੂੰ, ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ, ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਚਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕਸ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕਸ we come to know about the different cultures, about the different civilizations of the past as well as present, as all these literary works provide us information, they provide us knowledge about the way of life, how the people at that place, how the people of that particular time thought and how they behave in particular situations. तो उस टाइम ते लोगों की सोच की सी, लोगों का बिहेवियर किस तरह का सी, किस तरह की वो टैक्नोलॉजी यूज़ करते सी, तो उन्होंने जी लाइफ दी सोशल जी कंडीशन सी, समाजिक, आर्थिक या पोलीटिकल, वो किहो जी सिचुएशन के सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे सी। तो जो लिटरेचर है वो सानू लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसिस के लिए भी सानू जानकारी, इनफॉर्मेशन, ज्ञान प्रदान करता है, एज वेल एज it provides us knowledge about the present life, as well as the literature has a suggestive value also. Suggestive value means the literature provides us some suggestions to solve the problems of life. So the next significance of reading literature is that we understand not only the past life of a nation but its present and future also. So students, the literature not only informs us about the past times but it also provides us knowledge about the present as well as it also reflects about the future also. तो बहुत सारी लिटरेरी वर्क्स ने जिन्होंने विच पास्ट प्रेजेंट ਨੂੰ डिस्कस ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮਸ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, जो ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਐਸਥੈਟਿਕ ਸੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। The literature also reflects upon the social and the economic life of people. The literature provides us some solutions to solve the problems also. The writers not only discuss, they not only represent, they not only depict the common, the hard, the fundamental realities of life, but they also provide us some solutions to tackle a particular situation, to handle a particular situation in a different and innovative way. So by reading literature, by reading literary works, the all become familiar not only with the culture, with the social, with the economic as well as with the political conditions of our own area. तो सिर्फ सानू अपने सिर्फ एरिया की, सिर्फ अपने नेशन की, सिर्फ अपने ही समाज की जी जानकारी है, जी नॉलेज है, वो नहीं होंगे, बल्कि की है कि जो बहुत लोग सातों फार अवे प्लेसिस से रह रहे हैं, जो लोग सातों बहुत दूर रह रहे हैं, जिथे कि शायद असी फिजिकली विजिट नहीं कर सकते, as many of us are not capable to visit the far away places.
नहीं कर सकते हैं। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਊ ਟੂ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਨੀ ਆਫ ਅਸ ਆਰ ਨਾਟ ਕੈਪੇਬਲ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦ ਫਾਰ ਅਵੇ places, but with the help of reading literatures we can acknowledge, we can get knowledge about all those cultures and civilizations. So we can say that literature has a universal approach. The literature appeals to everyone regardless of the culture, regardless of the race, regardless of the time and gender. तो स्टूडेंट्स ये नहीं है कि लिटरेचर सिर्फ एक रेस में अपील करता है, कोई लिटरेरी वर्क लिखा हुआ है, कोई नॉवल लिखा है, कोई ड्रामा लिखा है। तो साड़ी पंजाबी के बड़े अच्छे राइटर्स ने, साढ़े इंग्लिश के बड़े अच्छे राइटर्स है, हिंदी के बड़े अच्छे राइटर्स है। तो यूनीवर्सल वैल्यू, यूनीवर्सल अप्रोच में क्यों कह रही है, क्योंकि साढ़े एक बहुत फेमस इंग्लिश के राइटर है, हर नेम इज अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय का एक नॉवल आया सी 90s के विच ਉਹਦਾ नॉवल पब्लिश होया सी। द नेम ऑफ द नॉवल इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड शी बैग्ड बुकर प्राइज फॉर दैट पार्टिकुलर नॉवल। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वाज हर फर्स्ट नॉवल। तो ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ नॉवल ਨੂੰ बुकर प्राइज मिलिया। बुकर प्राइज स्टूडेंट्स बहुत एक अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ बड़ा ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ प्राइज है ਜਿਹੜਾ कि किसी लिटरेरी आर्टिस्ट ਨੂੰ, एक राइटर ਨੂੰ प्रोवाइड किया जाता, दिता जाता। तो की है कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ नॉवल सी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स was translated into various languages of the world। तो ये की होगी कि यूनीवर्सल जी हैगी लिटरेचर की इंपॉर्टेंस होगी कि वो लैंगुएज का इफैक्ट नहीं है, ठीक, वो किसी पार्टिकुलर रेस का इफैक्ट नहीं है कि असी कोई लिटरेरी वर्क लिख देता है वो पार्टिकुलर एक रेस ही पढ़ेगी, उन्होंने एक पार्टिकुलर कॉम पढ़ेगी, उन्होंने पार्टिकुलर क्लास रीड करेगी, नहीं, इस तरह नहीं है। तो जो भी लिटरेरी वर्क्स लिखे जाते हैं, whether they are dramas, novels or poetry, they all are read across the nations, across the races, across the gender and across the cultures. Now I would like to discuss that literature has an artistic appeal and thus it appeals to our senses। ये साड़ी senses ਨੂੰ appeal करता है, ठीक। ਜਿਹੜੇ लिटरेरी वर्क्स ने वो एक artistic value रखते हैं। They all the literary works have a beauty, they have an aesthetic value and they all have a sense of beauty। Along with having artistic value, literature has intellectual value also, because literature stimulates critical thinking that enriches the mental process of abstraction and reasoning among the people। तो जो लिटरेचर है ये सिर्फ सानू आर्टिस्टिक जी है एस्थैटिक वैल्यू ही नहीं है, ये सानू एक रीजनिंग कैपेबिलिटी भी देता है, ये सानू एक कंपैरेटिव अप्रोच लाइफ के लिए सानू प्रोवाइड करता है। एक साड़ी जो मैंटैलिटी है, जो साडा एक सोच है, साड़ी थिंकिंग है, उनकी करता है, ब्रॉडन करता है। एंड लिटरेचर मेक्स अस कैपेबल टू रियलाइज द फंडामेंटल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ। जो साड़ी लाइफ ने कोई फंडामेंटल हार्श रियलिटीज़ ने, ट्रुथ्स ने, तो सानू कितों नॉलेज होंगी है, कितों नॉलेज होंगी है, we come to know about the fundamental realities of life, about the harsh truths of life by reading literary works। Along with providing us the fundamental realities of society, the literary works have suggestive value also, because literature unravels all the solutions and the ways with literal, with innovative and with creative thinking to solve all the problems, the situations of life। At the end of discussion, I would like to say that literature is a permanent storehouse of knowledge। Literature is the artistic expression of thoughts that is full of feelings and imagination। Why literature is a permanent storehouse of knowledge। Students जो books पहला लिखिया गई 19th सेंचुरी लिटरेचर लिखा गया, 17th सेंचुरी उस तो भी पहला लिखा गया, तो वो वैल्यू सिर्फ 16th 15th या 17th या 19th सेंचुरी तक नहीं सी। वो राइटर्स को, वो बुक्स में असी अज भी पढ़ रहे हैं,
Shakespeare. Uh, you all have uh, heard about the name of William Shakespeare. William Shakespeare has written near about 37 complete full plays, and his last 38th play is an incomplete. He has written 154 sonnets also. Shakespeare, William Shakespeare, is an dramatist of 17th century. But even now in 21st century, many of his plays are the part of university syllabus. तो फिर ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਏਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੈਲਿਊ, ਇਟਸ ਅ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ literature represents the diverse experiences of life with the charm of language। तो जो literature है, जिमें एक पेंटर एक पेंटिंग बनाता है तो ਉਹਦੇ ਲਈ वो यूज़ करता है ब्रश यूज़ करता है, कलर्स में यूज़ करता है, कैनवस में यूज़ करता है, और with the help of imagination, with the help of artistic skills एक बड़ी marvelous पेंटिंग बना देता है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक, तो सिमिलरली ਕੀ ਹੈ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕਸ ਹੈ। ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। And with the use of artistic language, the thoughts, the feelings, imagination and beauty are reflected, because the thoughts, the feelings, the imagination and beauty are the essential ingredients of literature. So students, I hope that you all are capable to understand the meaning of literature, what is literature, the significance of literature, why we all should read literature in our day-to-day life. At the end of this lecture, I would like to discuss about immersion. I would like to uh, hear quote about immersion, as immersion has said that literature is a record of best thoughts. So students, I hope that you all are able to understand the meaning of literature, and after listening this video, this lecture, you all will start reading literature.